ओके, तो स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, तो पूरा स्ट्रीम बंद करना पड़ा। तो उसका कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट किए थे उसमें जो ऑब्जेक्टिव था गेम का, मतलब स्टार्ट ही मतलब किए थे, 2 ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे। स्टोरी लाइन में अब तक हम किए हैं जो स्मॉल विली बिग एडवेंचर, उसमें एंकर का स्टोरी था, वो कुछ स्टोरी टेल कर रही थी, तो वो हो गया था। उसके बाद जो वो मतलब हाँ, उसके बाद जो था कि एक लड़की है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ डिस्कशन करना है, तो वो पार्ट अभी कंप्लीट करेंगे। और वो वहाँ पे रुक गया था, और उसके टाइम नेटवर्क थोड़ा इतना इशू हो गया कि बंद ही करना पड़ा। तो वो वाला पार्ट देखना है तो पहले वाला ये 43 पार्ट है, तो 42 पार्ट में जाके देख सकते हो कि वहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट किए थे, 2 ऑब्जेक्टिव वो कर लिए थे। ये उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम करने वाले हैं। वो ये कंटिन्यू पार्ट है, पहले वाला जो था स्टोरी वो खत्म नहीं हुआ था, ये सेम स्टोरी चल रहा है। स्मॉल विली बिग एडवेंचर का सेम स्टोरी चल रहा है, और वहाँ पे वो कंटिन्यू, उसका कंटिन्यू वर्जन नहीं है, वो आधा हुआ था पूरा। आधा भी नहीं, मतलब स्टार्ट होते ही खत्म हो गया था, तो उसको यहीं पे ही स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। वो एक्चुअली अचानक से ही नेटवर्क डाउन हो गया, पूरा डाउन हो गया, कुछ चलना मुश्किल था, तो उसको बंद कर दिए। और ये कंटिन्यू पार्ट है, इसको हम आगे जाके मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये वाला जो देखे होंगे लास्ट वीडियो में, जो ये वाला पहला वीडियो जो है 42, पार्ट 42 का, स्टीम का पार्ट 42 का है, उसमें जाके देख सकते हो। उसमें ये वाला पार्ट है था, जो कि ये जो लड़की है उसको कुछ डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, तो वहाँ पे रुक गया था। तो ये कंटिन्यू पार्ट है, यहाँ पे जाके इसको देख लेते हैं। उसको देखना है तो पार्ट में जाके देखो, मेरा प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में आप जाके ये देख सकते हो। 42 वाला पार्ट है प्लेलिस्ट में, लाटेस्ट पार्ट है, वो देख लेते हैं। देख लीजिए। उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, 43 वाला, ये कंटिन्यू पार्ट है, ये कोई दूसरा वीडियो नहीं है। 42 का 42 के बाद 43 है ना, तो 42 पहले देख लो, उसके बाद 43। एक ही स्टोरी चल रहा है, 42 और 43 एक ही स्टोरी में चल रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं। Hey, I saw you all by yourself over here. What's your name? I'm Ying. Ying. Got it. This is Rover. She's the captain of Team Woolly. Yes. Hello. You're here to ask about my thoughts on the story, right? I actually have something to ask you. Ask away. Encore will answer anything. Okay. Is it true that after gathering all 3 relics, you can have your wishes come true? Yeah, it's what it says in the story. I'd like you to see this.
ये मैप है। वाओ। Let me see. It's a map on a piece of wood. That looks like a lighthouse. And a giant rock over here. But Encore can't really tell exactly where it is. सेंट्रल प्लेन्स कहाँ पे? Whoa! You can tell just from that? Oh, you must have been to every corner of Jinzhou. मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे। There! An area on the map is circled out with a sword-shaped sign on it. Wait! Could this be a treasure map? That sign must be the Sword of Courage! Encore remembers that at some point of the story, the woolly warrior will get her hands on a treasure map. This map, where did you find it? It's from my mom. This map is a promise we made. Mom took me to a play one time. I remember in that play, the adventurers wanted to have their wishes come true. So with the Woolly Fairy's help, they set off to find the legendary relics. Just like in the story you told us. After watching it, I asked Mom all the time if these relics that could make wishes come true were real, and whether we could go look for them. But she was always busy with work as a ranger, so she wasn't home much. Then, one day, Mom gave me this treasure map. She said she got it from the Woolly Fairy, and it's for one of the hidden relics. एक मिनट, विली फेरी तो अंकर का है। अंकर ऐसे कौन सी चीज दे सकती है? ऐसे कैसे तो किसी भी चीज को दे भी नहीं सकती, क्योंकि बोलने का मतलब है कि ये एंकर का इमेजिनेशन हो सकता है, ये और कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हर वक्त वैसे ही कुछ स्टोरी पढ़ती रहती है, कुछ कर मतलब स्टोरी के अंदर ही घूमती रहती है। लेकिन ऐसा कोई आइटम जो कि उसकी माँ को दी थी, भाई अजीब लग रहा है ये। लेकिन स्टोरी में आगे जाके पता चल गया क्या मतलब सिचुएशन क्या है। एंकर ने दी थी वैसे कुछ मतलब मैप, और विली फेरी बोल रही है, मतलब ऐसे कोई दूसरा कोई ओनन बंदा तो नहीं दे सकता। एंकर के बारे में अच्छे से पता हो जिसको, वही ये लाइन यूज कर सकता है। तो हो सकता है रिलेटेड हो, मदर के साथ कुछ रिलेटेड हो। She told me next time she came back from work, she would go relic hunting with me, and that I wouldn't have to be afraid of anything with her around. एंकर को जो जानता है वही बता सकता है, क्योंकि ये एंकर का स्टोरी के अंदर ही है। ये रेलिक ढूंढना ये सब अभी एंकर ही मतलब अभी स्टोरी में बोल रहा था, मतलब बोल रही थी। और चीज ये है कि इसके मदर को कैसे पता चला कि रेलिक ढूंढना है, और रेलिक को ढूंढने के बाद जो भी विश है वो अ, आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सस्पिशियस है। मुझे लग रहा है कि ये एंकर का कोई जान पहचान है, और ये स्टोरी इसकी बेटी को भी बोल रही है। हो सकता है कुछ आगे जाके देखेंगे। She wanted me to think hard about what I'd wish for most once we found all the relics. I thought of a lot of wishes.
I wanted to have all the starflakes I could eat. Lots and lots of new toys. ये तो पूरा एंकर का स्टोरी लाइन के जैसा है, मतलब उनका स्टोरी लाइन इमेजिनेशन तो बोल नहीं सकते, जैसे लाइक एंकर का पावर है, वो जो सोचती है वो हो जाता है, उस टाइप का है कुछ। But now, I only have one wish. I want to see my mom again. There are so many things I want to tell her. The grown-ups all said that Mom was on a mission somewhere far, far away. But I felt like they were hiding something from me. I knew Mom was never coming home. But I just wanted to see her again. And then I thought of her treasure map. I told Dad about the map. And he just hugged me and didn't say anything. जिस टाइप ये बोल रही है स्टोरी, एंकर मतलब ये स्टोरी में इन्वॉल्व है, इस लड़की की स्टोरी में इन्वॉल्व है लग रहा है। एंकर की स्टोरी में वो है, वो उस लड़की की स्टोरी में ये है, दोनों रिलेटेड है। But when I heard your story, I was thinking, if it's all true, then maybe, just maybe... Then you should join our team! Encore knows that grown-ups always say that kind of thing just to be nice. Most of them are okay. Just a little stuffy sometimes. Encore's heard a lot of them before. So, Encore can tell what's real and what's not. Like this treasure map? It's 100% real, that's for sure. You really think so? Yup, trust me. Since your mom left you this treasure map, then there's more reason we should go look for it. Plus, Rover and I are searching for an ending to the story. क्या इसको पता है स्टोरी का एंडिंग क्या है? मतलब ये है कि Now, the उसको clue पता है। to the ending is right in our hands. What do you say, Captain? Let's get this journey started! इसको पता है कि ये रॉबर ने बोला था कि स्टार्टिंग में कि इसका स्टोरी के एंड तक जाना है, तो ये याद है उसको। अच्छा, ओके वाइस कैप्टन। Team Wooly is ready to roll out. Objective, the 3 relics. I'm not really familiar with Jinzhou. Have you ever been to that place, Ying? Yeah. Mom would sometimes take me on a field trip there. But she warned me not to go there alone, because TDs might show up. That's why she said she wanted to go with you together. All right then, it's settled. Let's go. Got no time to waste. ओके, head to the location mark in the treasure map. treasure map के हिसाब से कहाँ पे है लोकेशन? ये जगह बहुत दूर है। डायरेक्ट जंप करते हैं।
ठीक है, पहुंच गए और जल्दी से पहुंच जाते हैं। ये वाला पार्ट जो अभी कर रहा हूँ ना, 43 वाला, ये 42 पार्ट में खत्म हो जाता है, लेकिन ये नेटवर्क का इशू के कारण 43 में कर रहे हैं। According to the treasure map, the sword should be around here somewhere. ये क्या कर रहे हैं? Why are there so many Tic Tacs? Are they having a party? टिक टैक सर्कल में बैठे हुए क्या पूजा करे, और शायद कुछ चीजें जो कि देख रहे हैं। ओ भाई, They look really angry. No need to be afraid, Ying. We'll keep you safe. You probably don't know this, but Woolly Warrior once met a huge cat monster 100 times stronger than her, and she was so scared that her legs were trembling. कैट मॉन्स्टर, ये जो ड्रीम के अंदर एक कैट मॉन्स्टर था ना, ब्लैक कलर का, शायद वो बोल रही होगी। Really? That's right. But even so, she stood her ground. Because she had all of her friends behind her, she had to fight. Just like the situation we're in now. You can't let a few small TDs beat you down. Let's make this quick, Encore. Leave it to me. ओके, इनको यहाँ पे खत्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी आ जाएगा। Be gone, wicked soul! You two were incredible. You betcha! Wait till you see what else we can do. Am I right, Rover? हाँ, ये वाला है। We'll take on anything they chuck at us. ये वाला डायलॉग पहले भी बोल चुकी है, इजी पीजी। पता नहीं रोवर को कौन सिखाया ये। Quick! Let's check and see if the sword's around here. Is that some kind of puzzle over there? Oh, it's a bit too high for Ying and me to reach. I got it. Looks like we just need to place the treasure map on top. ट्रेजर मैप, अच्छा। पजल बल क्या है? पॉली पजल क्यों चाहिए? अच्छा, ये पजल ये वाला है ना, इसको बोल रही थी। अभी पजल आ जाएगा भाई यार, छोटा मोटा है तो ठीक है, कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा जल्दी से। Whoa! There's another puzzle. Was it not in the story before? Well, random twists and moments do happen here and there. It's an adventure after all. ये रियल लाइफ में भी एंकर ऐसा कर सकती है, ठीक है। मुझे लगा सिर्फ We're so high ड्रीम up. लाइन में करती है। This is even higher than any of the climbing games Mom and I used to play. Just keep looking ahead and it won't be as scary. It's easy. Here, watch. अरे यार, गलती से नीचे आ गया।
फिर से बहुत जल्दी कर रहा हूँ। Wind guide me. Wind guide me. Wind guide me. एक गिफ्ट बॉक्स को खोलने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। So, is this the sword in a story that can slice through anything? It's the mountain chopping sword of courage. एंकर को सब पता है। The sword's actually made out of wood. And it's missing a small piece too. Look, there's a letter. What does it say? My dear little warrior, you found the first relic. Right now, you must be thinking, what a plain-looking sword. How could this ordinary wooden sword possibly be the legendary sword of courage? Don't feel disappointed just yet. Think back on what you've been through so far. All the challenges you faced along the way. The waves under your feet felt so high to you, and the treasure chest above seemed ever so far away. Yet still, you continued to climb the mountains, every step of the way, until you finally reached the peak. Your courage, and this seemingly ordinary wooden sword, Is the proof of your courage. Yeah, that's what it says in the letter. How did you know, Encore? Did it also appear in other Woolly stories? Anything else? Did the letter mention any clues about the next relic? We still have 2 to go. Yes. It goes on to say, "Oh, little warrior, your adventure doesn't end here. To have your wishes come true, courage alone is not enough. You need not look far, as the shield that symbolizes faith is buried right beneath your very feet. In a land covered in sand, treasures may lay, or there may be nothing at all. A land covered in sand." I know just the place.
Let's go check it out. Sounds like it'll be a treasure hunt in the sand. ओके, यहाँ पे एक मिला है और दो चाहिए। We're here! At long last, the brave adventurers reach their second destination. And thus, they start a hunt for the legendary Shield of Faith on this sand-covered beach. They say only the bravest adventurers can find it, as it puts their will to the test. Yeah, that's the spirit. Yin can go left, Encore will go right, and you can take care of the middle. If anyone finds anything interesting, show me and we can take a look at it together. Okay. यहाँ पे दूसरा कोई पजल ना हो, चल मतलब दूसरा पजल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है, तो पहले मैं एक चीज कर रहा हूँ, रुक जाओ। बैठ सकते नहीं बैठ सकते। यहाँ पे 2-3 चीज मुझे मिला दिख रहा है, तो मैं सोचा यहाँ आ जाओ। और यहाँ पे ये क्या चल रहा है? रजिस्टर होस्ट 4। भाई यार इतने सारे पूछ रहे थे, क्या है ये? लॉकेट रो, you can open one of 5 keys. Okay. मुझे इसमें नहीं, और भी बहुत सारे। यहाँ पे क्या क्या है? ठीक है, यहाँ पे ये वाला पर्पल वाला जो है, इसको खोलते हैं। क्या हुआ? पे नहीं कर सकते क्या? ओके ठीक है, दे दिए अभी। इतने सारे बॉक्स है, कुछ तो मिल जाए। क्या मिला? एम्प्टी यार। अब क्या हो गया? पे तो किया था ना। 5 में एक खोल सकते हैं। भाई ये तो लुटना है। An unexpected discovery. ओके, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है।
मैं सोचा मिल जाएगा, वैसे ट्रेजर बॉक्स खोलने के बाद बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं था। तो वो एक छोटा सा मिनी गेम टाइप का है। तो पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पे खोद के देखते हैं क्या है। ओल्ड वुड, कुछ नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी कुछ नहीं। 3 जगह था, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मिल जाए। ओह यस, यहाँ पे मिल गया। Remnants of the past. हाँ, यहाँ पे भी नहीं। 3 नहीं, 4 है। Bingo. मिल गया। This, huh? There's a letter attached to it. I should. Well, did you find the shield? जो चीज़ वो बोलना चाहता था एंकर वहाँ पे, वो तो यहाँ पे भी बोल सकता है, क्योंकि सेम चीज़ रिपीट होने वाला है, तो इसलिए काट दिया, वहाँ पे स्किप कर दिया। Way to go! I know who to call if I ever need to find something. I'll go get you. This should be the shield mentioned in the story. It's also made of wood. But look how well made it is! With the sword of courage in one hand and the shield of faith in the other, it's an invincible combo! The person who crafted this shield really knew their stuff. शील्ड, स्वॉर्ड और क्या चाहिए? हेलमेट। देयर इज आल्सो लेटर। Time for clues about the next relic, the Wreath of Hope. Hurry! Yin! What does it say? Okay. Let's see here. It says... Congratulations again to you, my little warrior. Although the bulk of your efforts were in vain, you did not give up and continued searching. Hence, this shield of faith is your well-deserved reward. If you ever feel lost in the future, why not take a moment and ponder on the meaning of your journey? ये स्वॉर्ड जैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ मिलेगा। ये सीन आया है तो शायद कुछ तो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। The firm belief in our hearts shall guide us through darkness until we reach the light of hope. Now, I'm sure you're wondering, how can you find the Wreath of Hope? Bring with you your wishes and proceed to the Garden of Promise. The garden? The Garden of Promise. Oh, I think I might know where it is. Fantastic! Then that's our next stop. Onwards! एडवांस सेल, ठीक है। और अभी ये कितने दूर है? 200। ये कहाँ पे जाना है? ये तो चल के ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्प्रिंट ऑप्शन दे रहा है, मतलब ये एक बोल सकते हैं इस गेम में स्प्रिंट ऑप्शन है, डैश ऑप्शन है, दोनों ही चल रहा है। और बाकी जितने भी गेम हैं वहाँ पे स्प्रिंट ऑप्शन नहीं दिया है, डैश ऑप्शन दिया है। स्प्रिंट कर सकते हैं लेकिन इतना स्पीड नहीं है उसमें। और एक चीज़ है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये गेम में मैप बहुत दूर दूर रुकता है, मतलब बड़ा सा मैप है, वहाँ पे पहुँचना है।
तो स्प्रिंट का स्पीड उसी हिसाब से एडजस्ट किया गया है। और बाकी गेम में मैप छोटा रहता है लेकिन एडवेंचर बहुत ज़्यादा, तो इसी हिसाब से स्पीड कम है लेकिन एडवेंचर ज़्यादा रहता है। तो इसी हिसाब से ये गेम भी उसी हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं, मैप बहुत बड़ा है लेकिन उसी हिसाब से स्प्रिंट भी दिया है। तो मैच करने से दोनों एक से मतलब एक ही टाइप का है। इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, उसमें एडवेंचर करते करते कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकते हो, कह सकते हैं थोड़ा इधर उधर का मतलब हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक एक ही टाइप का है। लेकिन तभी दोनों गेम कंसेप्ट बहुत ही अलग है। चलो, ये तोड़ना कुछ चीज़ था लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं। This is it. This place, feels empty. There's nothing here. It is now. But it used to be filled with irises. This is my mom's garden. She used to love flowers and would plant a lot of them when she wasn't busy. Before she left, she asked me to help look after it and said she'd come see it with me when she's back. I watered them every day, hoping they could bloom longer. But these flowers only bloom for a short time. They all Dad told me. Don't be sad, sweetie. It's the natural cycle of life. I understood that, but it always reminds me of my promise to Mom. I miss her so much. Now I see this shield and sword are all treasures that Mom left me. And here, I think she probably wanted to make a wreath with me, using those flowers. Oh, Ying. Thank you, Encore and Rover. Actually, when I saw Dad looking sad while holding the map, I had the feeling that Mom might have left this treasure map to play a game with me. Maybe it is like what the grown-ups say. The gateway of wishes doesn't exist. And I may never get to see her again, talk to her, and tell her how much I've grown. But Mom must have wanted to give me a surprise. To make me happy. I am happy. Because we managed to find all the treasures she left behind together. I'll definitely find a nice place to keep this sword and shield safe. I think we should end our adventure here. Thank you, Encore and Rover. इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है। Our captain hasn't announced the end of our adventure yet. And you're thinking about leaving already? Well, okay then. Let's call it a day right here. There's some stuff I need to wrap my head around too. I remember you asked me about the ending of the Woolly Warrior, right? Even though we finished finding the relics, Team Woolly's adventure goes on. There's still plenty of stories to tell.
Oh, I know! How about you come to Encore story session tomorrow afternoon? Tomorrow? You mean right here? Yeah, if you want to find out what happens to Team Wooly, come over and listen to the rest of the story. Be there or be square. Okay then. I'll see you tomorrow. Yup! See you tomorrow, Ying. Do you think this is a good ending to the story? Good ending. नहीं सेकंड वाला देखते हैं. Yeah. After all, Ying didn't receive the wreath, and she didn't get to see her mother. Even though in the end, the little warrior did manage to collect all of the relics left by her, realizing her mother's intentions. तीन relic था ना, दो तो ढूंढ लिए, थर्ड वाला क्या है? But Encore still feels like something's missing. In this ending, she didn't even make it to the Gateway of Wishes. Just like in the story of the Woolly Warrior. What do you think? Will the Woolly Warrior's wish come true in the end? If it comes true, then she should be able to see her family again. After such a wonderful and interesting adventure, she must have so much to say to them. But actually, there is no true ending to Woolly Warrior's story. Remember the play Ying told us about when she showed us the treasure map? Ying said she'd already forgotten what most of the play was about. All she could remember was that the hero had been searching for a legendary treasure to make their wishes come true. Ha! I knew straight away that the treasure map wasn't for the Woolly Warrior's sword. But it was a gift left to her by Ying's mother. Wanna guess how I found out? First, Yeah, that play was about the Woolly Warrior's story. And I remember each and every part of it. तो एक्चुअली विली वॉरियर जो स्टोरी है वो एक्चुअली किसका है? एंकर खुद बना रही है या कुछ जैसे है पहले से ही है, उसको एंकर नरेट कर रही है, स्टोरी बना रही है और कुछ एक्शन दे रही है, पता नहीं क्या है चल रहा है. Because that play was a gift from my mom. हैं? तो इसके मॉम ने ये स्टोरी गिफ्ट की है, तो उसके मॉम ये कैसे उसको पता है कि ये वॉरियर के मतलब वुली वॉरियर का स्टोरी एग्जैक्ट सेम जैसा क्यों लग रहा है उसकी मॉम की स्टोरी की जैसा? इसकी मॉम और उसकी मॉम शायद हो सकते हैं फ्रेंड हो सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं. Now time for a story from Encore. In this story, there are no exciting adventures, no terrifying monsters. It didn't happen once upon a time, and it's not somewhere far, far away. Rather, it's in a little room. Every night there's a little girl. She plays games with her mother, playing as the Woolly Warrior. Together, she and her mom create story after story about courage and hope.
It also happens in her theater. Every day, the little girl sits below the stage. The curtain rises and the music plays. She watches her mother set everything up. Bring in the woolly kingdom from the story into real life. Little by little, the woolly kingdom becomes real. And the woolly warrior sets off on her adventure. She first climbs the tallest mountain, looking for the legendary sword that can split mountains and seas. But it's really so the girl can prove how brave she is. The toolbox was actually on the tallest shelf. The woolly warrior also searches every beach, looking high and low for the shield of faith that could brave any storm. Her house had many nooks and crannies after all. The raspberry candy her mom hid could be anywhere. Her mom recorded all the woolly warrior's adventures, so the woolly kingdom grew bigger and bigger, and the stories grew longer and longer. They even performed the play in many cities. But the little girl's mom got sicker. At the last show, just before the woolly warrior got the wreath of hope, the show ended, but there was no encore. इसका जो शो मतलब सिटी टू सिटी जा रहा था, तो हो सकता है कि जो वो छोटी बच्ची का जो मदर है, ये स्टोरी उसको भी पता है, इसीलिए पता है, और उसी के हिसाब से वो भी इस टाइप का कुछ स्टोरी बना के उसकी डॉटर को मतलब सुना रही थी मतलब हाँ, सुना रही होगी, और उसके हिसाब से ये स्टोरी इसको दी होगी, ये स्टोरी दे के इसके साथ खेल रही होगी। उसकी माँ के साथ क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसकी माँ ब्रेव वॉरियर थी शायद, और इसके हिसाब से कुछ गिफ्ट देना चाहती थी, तो ये स्टोरी देके उसको एक मोटिवेट करना चाहती थी। तो ये हो सकता है कि ये स्टोरी उसकी मॉम भी यूज़ कर रही थी, इसकी मॉम की स्टोरी वो यूज़ कर रही थी, क्योंकि ये सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे थे ना स्टोरी के साथ, वही चीज़ है। तो इतना तो मुझे लग रहा है कि ये है। Mom told me that once the applause starts at the final show of our tour, she'd take me onto the stage to make a wish. But she collapsed before the play ended. I was so scared. I tried to come up with ways to make her feel better. I even kept a daily to-do list. At the time, I thought that if I stayed a good girl like the characters in the stories, Mom would get better and better. But her illness got worse. She didn't get better. And the Gateway of Wishes never appeared. Encore didn't know what to do anymore. Mom just asked me to sit by her bed and tell her stories. So I told her about Warrior Cosmos, Fairy Cloudy, and many other things. इसलिए ये हर वक्त वैसे स्टोरी के अंदर ही रहती है, क्योंकि वंस उसकी मदर के बारे में याद आ जाए तो इसको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ये स्टोरी के अंदर ही रहती है, जैसे कि इसके मॉम के बारे में याद आना थोड़ा कम हो जाए। She always smiled each time. It was right around that time
when Cosmos and Cloudy appeared from the stories. Mom told me they're a part of life, and these stories will always be with me. After she left, Encore had to become the woolly warrior, going on adventures on her own. Whether it was in the orphanage or with the Black Shores, Encore would write down everything she experienced. अच्छा, तो ब्लैक शोर का मेंबर भी है ये. With these stories, Mom will know what kind of adventures Encore had, and all the friends Encore made. Later on, Encore wanted to continue writing the Woolly Warrior story, but this time, it's a bit different from before. Now she has her own friends, friends that she can adventure together to find the Gateway of Wishes. Because finding that gateway is the only way she can tell all her stories to her mom. So, she knows how well she did. That's why. That's why you want to go on adventure with Queen. Yeah, she said she had a lot to say to her mother. अच्छा. Oh, just like me. There's so much Encore wants to say, and so many stories that Encore wants Mom to hear. Our time with Ying reminded me of all of that. Even though Woolly Warrior's story has no true ending. Will Ying's be any different? Will she be able to make her wish come true? अच्छा, इसको पता है कि ये स्टोरी फिक्शन है, लेकिन ये ऐसे बोलती है कि जैसे कि ये रियल है, तो इसके हिसाब से ये जानती है कि क्या रियल है क्या नहीं. ये स्टोरी में भी बोली थी कि एंकोर को पता है क्या रियल है क्या नहीं, तो ठीक है. In the end, Ying said the adventure is over, and it's just a story. She said she was happy and satisfied with that. But Encore saw that look on her face. She looked really, really sad. Encore knows how it feels. Just like how it used to be. No matter what Encore did, Mom wouldn't get any better. My stories were the only things that could make her feel happy. It was Mom who made me understand the power of stories. That's why after I went on this journey alone, Cosmos and Cloudy came out of the land of imagination. And it's why Encore told Ying that our adventure should not end like this. This story deserves a better ending. Not just in story. दोनों का स्टोरी Oh, कंप्लीट करेंगे पूरा. Rover. Agreed. The story must have an ending. But what should we do? Oh, there's no way we can bring Ying's mother back. I mean, the Gateway of Wishes doesn't actually exist in real life. ये स्टोरी कैसे ढूंढे? In the story? I remember Cloudy said that if you ever find yourself in a pickle in real life, you can always go back to the Woolly Kingdom to search for clues.
स्टोरी ढूंढना नहीं बोल रहे, स्टोरी के अंदर ढूंढे बोल रहे। You also mentioned that's where the Gateway of Wishes is hidden, right? And you've always wanted to finish writing the story of the Woolly Warrior. This means the final stage of the story should be set inside the Woolly Kingdom. Encore sees what you mean. Encore could invite you and Ying into the Woolly Kingdom and go on a real adventure with me, the Woolly Warrior. But, the kingdom isn't some place you can go willy-nilly. विली किंगडम रियली एग्जिस्ट, यंग को बताना है। अच्छा, Only those who believe in the kingdom can visit. We should make a wreath for her and let her know that our adventure is not over yet. अच्छा, यंग के लिए ये स्टोरी में जो भी इंसिडेंट है उसको रियलिटी में लेना चाहता है, मतलब लाना चाहते हैं, लेकिन उसको बताना चाहते हैं कि ये स्टोरी फेक नहीं है, स्टोरी रियल है। Encore remembers it went something like this. The wreath is a crown of flowers that can reflect a person's thoughts. Never withers, forever blossoming. How are we gonna make it? एनर्जी तो पर्सन, अच्छा वो हो सकता है वही वाला You mean पर्सन। Verina? That's right! Verina loves flowers. She's a flower's best friend. Let's see if she has any ideas. अभी बरीना कौन है? मैं जो सोच रहा था वो शायद नहीं है, देखते हैं कौन है वो। और ये 600 मीटर दूर है भाई। यहीं पे जाके, अच्छा वेरीना, वो लड़की, छोटी सी लड़की, अच्छा वो वाली लड़की, हाँ वो उसको पता है, वो कर सकती है, उसके हीलिंग मैजिक में कर सकती है। याद आया, भूल गया था उसके बारे में। Hi, Rover. Oh, Encore's here too. How's it been? Are you here to see the new blossoms? You'll have to wait a while. They're still a bit shy. Hey, Verina. Not exactly. We're here to ask you how we can make the Wreath of Hope. The Wreath of Hope? It's a long story. स्टोरी बताओ क्या है? I see. You want to help finish the story Ying's mother left her and make her wish come true. Yes. But I don't know how to make such a wreath either. According to the story, this wreath is made of various kinds of flowers. It can reflect a person's thoughts, and it must blossom forever and never wither. The flowers that can reflect people's thoughts, the ones that I can think of are water lamps. These flowers emit a faint glow at night, and passers-by use them to guide their way. Wow, ऐसे भी कोई फ्लावर है क्या? Or wintry bells. Wintry bells bloom in cold and snowy weather. Seeing them in a cold winter will definitely make you happy. It can also be duvetches. Due to their sweetness, they remind people of sugary candies. However, these flowers all bloom in different seasons.
So it'll be hard to put them together, let alone have them blossom forever and never wither. What we use forte? Forte क्या है? Yeah, I remember you created a Blake bloom for Rover that one time. That's a bit different. Flowers made with Forte are just artificial creations. They can easily break up without actual substance. It's not the same as life. Every life has its own journey, from blooming to withering, recording the feelings of every moment along the way. Feelings? Oh, I know! Since we can't really make a wreath of flowers exactly like the one in the story, we could make one using our feelings. Yeah, exactly. When me and Mom made wreaths, she'd always ask me to pick my favorite flowers. If I was feeling happy, I would choose a bright red flower since it made my heart feel warm. And if I was feeling unhappy, I would take a blue one. At this point, it really doesn't matter what kind of flower it is. All that matters is everyone's feelings. Everyone's जो flower लिखे हैं. Everyone है differently. We should make a wreath and tell Ying our wishes to make our dreams come true. I see what you mean. A wreath made with feelings. With that, you can express yourself. That's right! Let's find flowers that can express our feelings. When she sees the wreath, she'll definitely realize that the story of our team is still going. This way, we can all visit the Woolly Kingdom together. And maybe our wishes can come true. Do you mind if I help? Once you've collected enough flowers, bring them to me. I'll help you weave them into a wreath. Great! Oh, thank you, Verina. Off we go! Okay, अभी क्या करना है? एंजेलिका और दीप, ये एक है. जो वहाँ पे एक है. एक हो गया. Have you found the flowers you want? You are a pink flower. Look how pink it is! You must have been in a really good mood when you picked this one. And these? These are Encore's picks. That's quite the selection, Encore. What do they all represent? Have a look at this one. It's gold and shiny, and it matches the color of your eyes, Rover. Yellow, orange, black. Encore क्या है? picked flowers that resemble everyone. If we put them together, they can represent our whole team. Oh, that's pretty special. I'm sure it'll look really nice once they're all together. Uh-huh. Oh, one more thing, Verina. Can you leave a spot here on the wreath? Leave a spot? It's for Ying. We don't know what kind of flower represents Ying's feelings, so we should leave a spot and let her decide which feeling to put on there. Got it. I'll take it from here. Thank you so much, Verina. Rover, when the wreath is done, we can go tell Ying the rest of the story.
वरीना जो है वो ब्लैक शोर से भी कनेक्टेड है और ये एंकर भी कनेक्टेड है। ये सब ब्लैक शोर से कनेक्टेड है। Don't forget, tomorrow afternoon. तुम्हारा अच्छा तो ये क्या है तुम्हारा मतलब अभी टाइम को सेट करना है। नेक्स्ट टाइम टुमारो आफ्टरनून हम अभी शायद ठीक हो जाए। नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते। अभी हो जाए शायद। हो गया। वहीं पे जाना है, टाइम सेट करना है, वहीं पे जाना है, यहीं पे आगे आना है। एंटर द विली किंगडम। ये क्या है? हेड टू द गार्डन, हेड टू द गार्डन। Leave it to me. इनको खत्म करो पहले। Hopefully this helps. I can't believe it. Good? No wicked. We'll face judgment. Make me buzz. An unexpected discovery. ये पहले यूज हो चुका है। चलो ऊपर जाते हैं। अरे यार, Leave it to me. मैं ज्यादा अंदर तो नहीं आ गया, अंदर ही आ गया। Hopefully this helps. Tempest slashes. Whirl and wuthering. जहाँ जाना था वो ऊपर ही है, ऊपर जाना है। मैं बेकार ही अंदर आ गया। Leave it to me. ये हर वक्त क्यों आ जाते? Wind be my blade. अरे यार, कोई भी आ जाता है बीच में। Ow! Purging all evil. Good? Hopefully this helps. ओके ठीक है। और यार ये भी, ये लोग यहाँ पे भी। We'll face judgment. जहाँ भी जाओ मॉन्स्टर मिल जाए, नहीं तो एग्जाइल। ये सब इसका एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका कहाँ एक्टिवेट होगा? बटरफ्लाई कहाँ गए? यहाँ पे बटरफ्लाई होना चाहिए।
ये जो डायरेक्शन दे रहा है ना, यहाँ पे शायद हो सकते बटरफ्लाई। वाह, चलो। ठीक है, ये बाकी उनको छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाते। और ये क्या बन गया? और ये क्या बनाए क्या है? Rover, you're here! ये क्या है? Course not. You're right on time. Encore has just set everything up. अच्छा, ये स्टोरी टाइम को ये भी रियलिटी में ले आई। See this little stage? Cosmos and Cloudy helped me set it up. Pretty impressive, don't you think? Cloudy says, right on! That's teamwork for ya! यहाँ पे ये छोटा सा मिनी थिएटर बना के इसका एक्टिवेट करती है, अपना स्किल एक्टिवेट करती है। जो स्टोरी लाइन है उसको रियलिटी में आ जाती है। ओके। I know this is just a small stage for storytelling. I wanted to try the way Mom used to do it. She and I started the Woolly Warrior story after all. Besides, it'll be more fun this way. Encore wonders if Ying will show up today. We didn't really pinky promise. He'll there. He'll here. He'll be here. अच्छा, Encore? उसको Rover? यार मैं क्या Sorry for the wait. Glad to see you. Thank you. All right. Now that Team Woolly's fully assembled, is everyone ready for the story? Ready. This stage. This is the small stage Encore made for the play, where the warrior's adventure continues. Does anyone remember where we last left off? Oh, I know. The Woolly Warrior was trying to find the 3 relics, but I'm not sure if she will find them or not. That's right! The Woolly Warrior sets out to find the 3 relics. This time, she's not alone. She tries to climb to the top of the highest mountain with her trusty companions. With the mountain being so high up, the waves raging below them, she nearly falls several times, but her friends manage to keep her steady. In the end, she obtains the legendary Sword of Courage. Later, she arrives at the beach filled with sand as far as the eye can see. She searches and searches, and all she can find are just some tiny shells. But with the help from her friends, the shield of faith is uncovered. Only the wreath remains. Will she find it? Unfortunately, no. After reaching the mythical Sea of Flowers, all the flowers have withered. No matter where she searches, the Wreath of Hope is nowhere to be found. Just like us. Yet, her companions want to finish this adventure for her. They gather flowers and weave their feelings into the shape of a crown. The pink flowers are meant to make her feel happy,
The blue flowers are hopes that she will not be scared of any obstacles. Puppy and hawk. This wreath brings together all the feelings and emotions of the companions during their adventure. Their gift to her. And that is the moral of this story. Is it complete? Complete नहीं हुआ है क्या? मैं Her सोचा यही दे companions देंगे. remark so. The wreath isn't fully completed. It's missing a very important flower. Ying, this wreath is missing the flower that represents your feelings and wishes. My feelings. I know. It's missing an iris. I've always wanted Mom to see a garden full of blooming irises. But those irises have already withered. What if we could find one? Find one? What if we could find an iris and the gateway of wishes? Will you want to continue on this adventure, Ying? Of course. But I thought there was no such thing as the gateway of wishes. It only exists in the story. We can find it in the story. Story में जाके ढूंढना है. In the story? That's right! Because stories aren't just stories. When you believe in them, they'll really exist. एक मिनट ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है ना मुझे नींद आ रहा है. क्यों बचा रहे हो भाई? Just like how it is now. With everyone's feelings combined into the wreath, it slowly turns into a door. A door that leads to the deepest parts of the woolly kingdom. Inside, the irises continue to bloom. So, do you believe in it and choose to continue this adventure? I believe. Great! Off we go! चलो एडवेंचर करते हैं. विली किंगडम सोलो चैलेंज. ओके चलो इनको ही ले लेते हैं. Would you look at the sky? So this is the woolly kingdom. You got a first name? Rover and I can be your guide. This story is gonna be longer than the last one. It looks like there'll be more puzzles to solve and more monsters to fight. पजल वाला गेम आ गया भाई. ये तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कभी-कभी. ठीक है देखते हैं. And the door to make wishes should be in the deepest part. What are your orders, Captain? अच्छा ये रोवर का स्पेशली रोवर नहीं है एंकर का. एंकर ये कर रही है कि इसको बनाना है कि ये फील्ड बनाना है. फ्लावर का फील्ड. तो ये सिर्फ एक स्टोरी जैसा दे दिया है लेकिन इसको दिखाना है कि ये फील्ड तक जा रही है. समझ में आया? Look at the is the adventure story. Yes. I want to find the gateway of wishes and then see my mom again. ये Let's get going. पता नहीं ये स्टोरी में विश कम ट्रू हो सकता है कि नहीं पता नहीं. देखते हैं क्या है स्टोरी में और क्या चल रहा है. How do we get across? उड़ के जाएंगे. No worries. We can use that platform down there to fly across.
ये नीचे कूदना पड़ेगा क्या? Time for Encore's aerial recon! अच्छा यहाँ से ही मतलब There's a puzzle. पजल स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या करना है? अटैक। प्लंजिंग अटैक। Encore knows what to do. Encore played these with Mom before. All अरे we ये need तो to बहुत do इजी is है, match the हो जाएगा। patterns on the wall and it'll बीच open में a वाइट, secret बाकी साइड door. में ब्लैक ब्लैक। It's one of the most important puzzles in Woolly Warrior's story. It's open! Great job, Rover. Let's go inside. अच्छा ये अब An ये airstream. एक्टिवेट करने के लिए We था। can use it to fly up. Are you sure I can fly? Looks like we've reached the end. That was fun. I'll have to tell Mom about it when I see her. Okay, time to find the exit. It's another one of those puzzles. I know. ये भी Let's look around for clues. वाइट, बाकी दो ब्लैक। चलो हो गया। Wow! You solved it in one go? अभी There are यहाँ so पे many तोड़ना। अरे monsters. इनको भी They're दे not देना। stopping चलो। anything. Oh, hey, what's that? Yeah. Oh, Mom gave me this sword that can cut through anything. Take this! Bullet, let's race! Ha! ओके हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे तो इसको तोड़ना होगा। यहाँ का पजल कहाँ गया? ऊपर ब्लैक। ठीक है देख लेते हैं। Oh, shiny! It's gotta be a dragon's treasure. इसको भी तोड़ना है। तो ये दो यहाँ पे दे दी थी यार। मैं सोच रहा था कि कहाँ क्या करना है। और भी कुछ है Bullets, क्या? let's race! अच्छा इसमें ये देखना है। बाकी वाइट, ये ब्लैक और वो ब्लैक क्यों? ब्लैक एंड वाइट है। वाइट के नीचे ब्लैक है, ये ब्लैक और वाइट। ठीक है, वाइट के नीचे ब्लैक, ये More puzzles here. Those markings in the other room must be clues. Sounds like an airstream appeared. Let's head back and कुछ check तो it खुला out. वहाँ पे। Are we flying again? Yay! Fly time! वाइट एंड ब्लैक। ओके वाइट एंड ब्लैक। जाना कहाँ है? ऊपर। The wind is so strong! Is it taking us straight to the Gateway of Wishes? नीचे कुछ था, एक चीज मैं देख लेता हूँ। Oh,
ये कौन सा चीज है? इसमें तोड़ना है, क्या करना है? देख लेता हूँ। ये एक छोटा छोटा चीज रहता है जो कि क्लियर करना होता है। और ये है ब्लैक। ब्लैक शायद ब्लैक होगा, कर देते हैं। कुछ हुआ क्या? या तो इसको कर देंगे। हाँ नहीं, ये ठीक है शायद। देखते हैं, जाके ही देखेंगे। मॉन्स्टर। ये उछल कूद करने वाला गेम। What happened here? Don't worry. Stuff like this happens all the time. This means the story of the Woolly Kingdom is changing. But that's not enough to beat the warriors. चलो अभी यहाँ से जंप कर करके जाएंगे। ये मुझे थोड़ा ठीक ही लगता है। एक दो हाइट कौन सा ज्यादा है? ठीक है। Finders keepers. और वहां पे जाना है। पहुंच पाएंगे? There has to be more, right? Oh. Monsters? I'm not scared. I have Mom's sword and shield with me. Da-da-da-da-da-da! Oh, leave me alone! ये जो लास्ट में स्पेशल अटैक कर रहा है ना, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि फाइट करेगी या नहीं करेगी। मुझे लग रहा है कि कुछ समय ये चुपचाप बैठ के गुस्सा करेगी, लेकिन उस समय भी ये डैमेज ले लेती है ना, वही चीज़ है। Oh, shiny! It's gotta be a dragon's treasure. और भाई यार वहाँ जाना है। डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन लूट लेना है मुझे। Time for Encore's aerial recon. There has to be more, right? Finders keepers. Feeling stuck? Why don't we search around for clues? ब्लैक। Time for Encore's aerial recon. अच्छा, We're almost there.
After passing every trial set before him, the flower of hope is finally within the warrior's reach behind this door. Maybe this door leads to the gateway of wishes, where countless warriors once hoped to pass through to have their wishes come true. And now, the warriors will find out what kind of monsters or treasures are hidden behind the door. Is everyone ready? Ready. I'll be able to see my mom soon. Let's go. Right. Through the door we go. आसपास कुछ है वैसे कुछ लेना मतलब ले सकते हैं क्या? ना वैसे कुछ नहीं है. वो पहुंच गए क्या? ओके ये लास्ट वाला जैसा स्टेज है. इवेंट एक किए थे ना एंकर का, वो वाला स्टेज टाइप का है. और ये यहाँ पे फाइट हो सकते हैं. ये भी तो फाइट होगा. ये इसका फाइनल स्टेज है. यहाँ भी फाइट होता है. Out of nowhere, ड्रीम वाला a जो group गेम था of एक ड्रीम Gulpuffs में. appear, but they are no match against the mighty warriors. With the sword of courage in their hands, there's no fear holding them back as they slice through these monsters with ease. The monsters strike, but our shield stands strong. Now, our warriors know victory is ours. That didn't hurt at all. No one picks on Uncle's friends. Please behave. क्या हो गया? ओह खत्म हो गया. तो इसका फाइटिंग स्टाइल थोड़ा भूल गया था. आयरिस, अच्छा आयरिस वाला जो फ्लावर है वो बोल रही थी. इसको ढूंढने के लिए इतना बड़ा एडवेंचर बनाई. Iris is a mom's favorite. I want her to see it too. We should make our wish. Yes. Look! Because of the brave warrior's wishes, the story has a happy ending. Your wish has come true. You can tell her everything now. Mom, there's so much I wanted to tell you. So many new stories you need to hear. Oh. It's a very happy story. ओ मतलब ये कि दोनों तरफ से स्टोरी उनका हैप्पी एंडिंग हो गया. सही है. और ये देखो भाई यार क्या क्लियर लग रहा है भाई. There has to be more, right? चलो ये स्टोरी एंड हुआ.
And just like that, the little warrior's wish has come true, putting a perfect ending to this adventure story. अभी तक ये स्टोरेज में ही बोल रही थी या कुछ अलग था? The warrior finally gets to meet her mother, telling her all the stories and words she has always wanted to tell. But the warrior's journey won't end here, as the path ahead is a long one. Encore, Rover, thank you both so much. I finally got to see her, and we talked so much. I told her how much I've missed her, how I found the treasures she left behind, and how I met both of you. अच्छा, तो ये हो सकता है कि ये सच में लास्ट में वो उसके मॉम के साथ मिल पाई, शायद हो सकता है ये स्टोरी नहीं हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसा फीलिंग है जो कि इन दोनों को लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि बाकियों को लगेगा। I never thought I'd see her again. और ऐसा हो सकता है कि स्टोरी में ऐसा चीज़ है कि जो कि उसका फीलिंग जो है वो उसको रिप्रेजेंट करके उसको दिखाई है, और वो उसको लग रहा होगा कि ये रियल है। एनकोर को पता है कि ये क्या है, लेकिन उसको लगा होगा कि ये रियल है। तो हो सकता है कि स्टोरी में उसको हैप्पी एंडिंग दिखाना था, तो वो दिखा दी। So, I want you to have this. तो Yes. I know you still have more adventures ahead. So I'd like this wreath to keep you company. I want to go back and tell my dad this story now, and tell him what my mother said to me. So, this is where we say goodbye. Be sure to share our story with everyone. बाय बाय। I will. Goodbye. Time for another feedback session from the audience. What do you think of this story? ये फाइट के बारे में ही पूछ रही है, लेकिन हाँ वो तो है, फिर से पूछ देते हैं। But the parts where everyone was fighting as a team were super cool. Encore loves this ending. The woolly warrior finally fulfilled her wish, and she got to tell her mother all her stories about the companion she got to meet, who she went on adventures with, defeating all kinds of monsters that stood in their way, their search for the sword and shield as a team, and how they put together the wreath of hope. We've been to many places together, but there is so much more to go, and so many adventures and stories to write about. These stories are an extension of life. They are. Story with happy ending. Yeah, stories with happy endings. Mom said the same thing. और हो सकता है कि सच में उनके दोनों
इन दोनों का मदर आई होगी, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है। Yeah, Encore had never thought of such an ending when telling the Woolly Warrior story in the past. I really enjoyed how it ended. ये कह सकते हैं कि ये कि मिरेकल था जो कि उनके मदर को लास्ट में देख पाए। The story of the Woolly Warrior's search for the relics is finished, and my vacation is about to end. It's time to head back to Black Shores. Oh, enough with the homework already. No biggie. Even though this story is over, Encore will make sure to prepare a new adventure next time we meet. Let's be on the same team together. And you can still be the captain. Wanna do a pinky promise? और ये एडवेंचर है और ब्लैक शोर का मेंबर भी है और स्कूल भी जाती है। वाह, श्योर। I pinky promise that we'll write as many stories as we can together. As a team. Pinky promised. ओके, फाइनली कंप्लीट हुआ ये। इसमें कुछ आइटम भी मिला है। ये सब आइटम मतलब स्टोरी में है भाई यार, ये तो बहुत ही पुराना है। मतलब सोच सकते हो कि ये क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 में था ये सब, और ये आइटम कलेक्ट भी नहीं किए थे भाई। क्या यार, इतना पुराना आइटम अभी कलेक्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 कौन सा एक्ट पता नहीं, लेकिन चैप्टर 1 में था। ये चैप्टर 1 का ही ये चल रहा है, क्योंकि चैप्टर 2 तो कितना 6 एक्ट चल रहा है ना। 6 का साइड स्टोरी, कैंपेन स्टोरी बहुत अलग है। 6 में ये सब नहीं थे, मतलब चैप्टर 2 में ये सब नहीं थे। चैप्टर 1 में ये सब थे, एंकर था और जो लास्ट टाइम किए थे चैंगली, ये सब चैप्टर मतलब 1 में है। तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और अच्छा हुआ ये कंप्लीट हो गया। और इसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसको पहले देख लेना 42 का, मतलब वेदरिंग वेव पार्ट 42 जो स्ट्रीम के हैं उसको पहले देख लेना, उसके बाद ये 43 देखना। नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि ये आधा से क्यों स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। 20 से तो नहीं, ये स्टार्टिंग का 2 पार्ट, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव के बाद ही ये है। तो पहले वो वाला देख लो, उसके बाद इसका देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टोरी है, वो स्टोरी यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, वो स्टोरी वहाँ पे मेंशन हुआ है। तो स्टोरी देखो, उसके बाद इस यहाँ पे आना। और एक स्ट्रीम में होता, लेकिन कोई नेटवर्क का इशू कारण वो नहीं कर पाए और स्ट्रीम बंद कर दिए। उसके बाद 2-3 मतलब 2 घंटे के बाद मैं फिर से स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो क्योंकि बाद में करना इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए कर लिए, मतलब 2 घंटे के बाद फिर से स्टार्ट कर दिए। क्योंकि बहुत छोटा सा स्ट्रीम था, उसमें कुछ नहीं था, जस्ट एक स्टोरी था। तो उसको उसका आगे का पार्ट यही था, ये सब था। तो पहले उसको देखो, उसके बाद ये। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।